Hello and welcome in this online video lecture series for the subject C303, that is surveying. So in the last videos we have covered total 3 units. The first unit was basics of surveying, in which we covered various concepts about surveying, that is the types of surveying, the principles of surveying and the various aspects of surveying. In the second chapter we covered the unit number 2, that is theodolite. So in that unit we covered a brief about the instrument, that is theodolite, and what are the different operations that we can do using theodolite, what are the different applications of theodolite, and what are the different operations that we can perform by using theodolite on the field. Next we started the chapter number 3, that is tachyometry. So in that chapter we studied about the brief about the instrument, that is tachyometer. So tachyometer was nothing but just a special type of theodolite, in which there were two more hairs as compared to theodolite. So in that we studied a lot about the tachyometer, that how we can measure by using tachyometer, what are the different types of tachyometer, what is the formula for horizontal distance by using tachyometer. So in that we studied the formula for calculation of horizontal distance, that is D equals to Ks plus C, where K is called as multiplying constant and C is called as additive constant. And for the analytic lens, the value of K is 100 and the value of additive constant, that is C, that was equals to 0. So in that way we covered the 3 units in the last videos. Now we'll move to the unit number 4, that is curves. So curves are the most common elements of civil engineering that you have seen a lot in your day-to-day life. While moving on highway, while moving on railway track, you must have seen various type of curves. So in detail about curves we will study in this chapter. Here we will study different types of curve, that is the vertical curve and horizontal curve. Also we will study how we construct or how we can make all these curves. So all that about the curves we will study in this video. So in this video first we will cover a brief introduction about curve, that what are curves and why curves are used, what is the need of the curve on field. So all that we will cover in the introduction part of this video. After that we will see different types of curve, that what are the different types of curve. We will see that basically curve can be classified on the two types, that is the horizontal curve and the vertical curves. Again horizontal curves are further divided, that all we will see in that section, that is types of curve. After that we will see a number of different terms related to curves, such as you must have seen that super elevation. So all that we will cover in this term, in this section, that is definition of different terms. After that we will see different types of horizontal curve. As I told you that curve basically are of two types, that is horizontal curve and vertical curve, and I also told you that horizontal curve are further classified. So we will see a number of types of horizontal curve. So all that we will see all these 4 points in detail in this video. So these are, first is introduction, then we will have types of curve, then we will have definition of different terms, and then we will have types of horizontal curve. Okay, so now we will see the introduction about the curves. So during the survey of the alignment of a project involving roads or railways, the direction of the line may change due to some unavoidable circumstances. The angle of the change in direction is known as deflection angle. For it to be possible for a vehicle to run easily along the road or railway track, the two straight lines are connected by an arc, which is known as curve of the road or track. So what this slide is saying, so suppose when you are doing surveying, so there must be any need, then when you need to change the alignment of your road. First of all you will try to avoid such type of change of alignment, but if the condition is unavoidable, that is you can't avoid that change of alignment, so what you will do, we will make a arc for it to be possible for a vehicle to run easily along the road. See what happens, it is not possible for a vehicle to suddenly change the alignment. So forward what we will do, so we will connect that two alignments or two straight lines by using a arc. So that arc will be called as road or track. So जब हम सर्विंग करते हैं, सर्विंग करते समय ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो अलाइनमेंट है रोड का या फिर रेलवे ट्रैक का, वो सडनली चेंज होता है, मीन्स वो अपना जो डायरेक्शन है उससे वो डिफ्लेक्ट होगा. सो व्हाट विल हैपन, तब हमें क्या करना है, सडनली हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल रेलवे ट्रैक हो और फिर सडनली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए. ऐसी कंडीशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करें, बट स्टिल
अगर ऐसी कंडीशन को हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, जो दोनों अलाइनमेंट है उनको एक आर्क के माध्यम से हम उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। टू स्ट्रेट लाइंस आर कनेक्टेड बाय एन आर्क विच इज नोन एज कर्व ऑफ द रोड और ट्रैक। सो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को जिस आर्क से मैं ज्वाइन करूंगा उस आर्क को मैं बोलूंगा कर्व। सो क्या हुआ है, सडनली ऐसी कोई कंडीशंस अराइव हो गई है जिसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हमें सडनली अलाइनमेंट रोड का या फिर रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट हमें चेंज करना है। सडनली हम एक सडन शार्प चेंज नहीं दे सकते हैं बिकॉज दैट विल नॉट कॉज अ ईजमेंट ऑफ ट्रेवल। सो अब हम क्या करेंगे, जो दोनों अलाइनमेंट है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, इन दोनों अलाइनमेंट को हम एक आर्क के माध्यम से ज्वाइन करेंगे और इसी आर्क को मैं बोलूंगा कर्व। Okay, so if we will see this diagram, so in this diagram we are seeing two alignments. First alignment is AB and the second one is BC. So we are saying that alignment is changing from AB to BC. First the alignment of road was this, that is this AB line, and after this the alignment was deflected by an angle of this phi, and the new alignment that has become is BC. So what we are saying here is that the alignment is changing from its direction from AB to BC by an angle of phi. So we can't give the road in this alignment, that is from AB to direct BC, because the turning from AB to BC, that will be very difficult. So for this purpose we are giving this curve to provide smooth change in direction. So जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे पास दो अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं, फर्स्ट इज AB एंड सेकंड इज BC। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला अलाइनमेंट है ये AB और उसके बाद है दूसरा BC। सो अब जो अलाइनमेंट है हमारा वो चेंज हो रहा है AB से BC, कितना एंगल से, 5 एंगल से। सो अगर हम ऐसा रोड देते हैं डायरेक्ट AB से BC की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सो इस डिफिकल्टी को ईज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड एन आर्क, हम एक आर्क प्रोवाइड करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं कर्व। जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में डेफिनेशन में बताया कि कर्व इज एन आर्क विच इज प्रोवाइडेड टू चेंज द अलाइनमेंट। सो AB से BC अलाइनमेंट चेंज हो रहा है वो एक कर्व की मदद से चेंज होगा। और ये जो एंगल है, जितने भी एंगल से अलाइनमेंट चेंज होता है, इस एंगल को मैं बोलता हूँ डिफ्लेक्शन एंगल। इस डायग्राम में डिफ्लेक्शन एंगल को बताया गया है फाई से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल स्टडी सम टर्म्स, हम आगे जाके कुछ टर्म्स पढ़ेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व के, उसमें डिफ्लेक्शन एंगल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी की मदद से हम बहुत सारी डेफिनेशंस को समझेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ इस डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं AB से BC अलाइनमेंट चेंज हो रहा था और इस अलाइनमेंट को हम शिफ्ट करने के लिए, रोड को हम शिफ्ट करने के लिए कर्व का हमने यूज किया था। So along the alignment of any project, the nature of the ground may not be uniform and may consist of different gradients. So suppose when we are doing surveying or any task in civil engineering, so we may encounter some different gradients in vertical plane. What does this saying? जब हम सिविल इंजीनियरिंग में कोई काम करते हैं, जब हमें कोई सर्वेइंग कर रहे हैं, सो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमें डिफरेंट ग्रेडियंट्स मिले, डिफरेंट स्लोप्स हमें मिले। सो जैसे कि अगर हम अज्यूम करें एक हिल, सो हिल पे डिफरेंट स्लोप्स होते हैं। अगर हमें ऐसे हिल्स पे कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है, सो व्हाट वी विल डू, सो इन सच केसेस अ पैराबोलिक कर्व्ड पाथ इज प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन इन ऑर्डर टू कनेक्ट द ग्रेडियंट्स फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। ऐसी कंडीशन में जब डिफरेंट ग्रेडियंट्स होंगे इन वर्टिकल प्लेन, तो उस कंडीशन में एक पैराबोलिक कर्व्ड पाथ हम प्रोवाइड करेंगे इन द वर्टिकल प्लेन। इन सच केसेस अ पैराबोलिक कर्व्ड पाथ इज प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन इन ऑर्डर टू कनेक्ट द ग्रेडियंट्स फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। इजी मूवमेंट करने के लिए व्हीकल्स का हम एक पैराबोलिक कर्व्ड पाथ को प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल प्लेन में। दिस कर्व इज नोन एज वर्टिकल कर्व। अब जो हमने वर्टिकल प्लेन में जो हमने एक आर्क प्रोवाइड करा है या फिर जो कर्व प्रोवाइड करा है, वैसे कर्व को हम बोलेंगे वर्टिकल कर्व। जो कर्व वर्टिकल प्लेन में हमने प्रोवाइड किया है दैट कर्व इज कॉल्ड एज वर्टिकल कर्व। और ये वर्टिकल कर्व जो है अलग अलग ग्रेडियंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करेंगे या फिर डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे। When the curve is provided in the horizontal plane, it is known as horizontal curve. So it is clear from name only. The curve which is provided in vertical plane, that will be called as vertical curve. When the curve is provided in the horizontal plane, so it is known as horizontal plane. So what we have studied in this slide, along the alignment of any project, the nature of the ground may not be uniform and may consist of different grades. So जब ground पे अलग अलग different gradients हमें मिल सकते हैं, in such cases a parabolic curved path is provided in the vertical plane in order to connect the gradients for easy movement of the vehicles.
ऐसे केस में हम पैराबोलिक कर्व पाथ को प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू कनेक्ट द ग्रेडियंट्स फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स. So now as we have seen that why curves are used. So now basically if we will talk about the various types of curve or how we can classify the curves. So broadly we have two types of curve, that is horizontal curves and vertical curves. So as I told you in the previous slide also that the curve which are in horizontal plane, so that type of curve will be called as horizontal curves, and the curve which will be in vertical plane, so that type of curve will be called as vertical curves. So it is simple and you can predict from name only that curve which are in horizontal plane, so that will be called as horizontal curves, and the curves which are in vertical plane, that will be called as vertical curves. Again if we will further divide the horizontal curves, so it can be divided in 5 types also. So horizontal curve, the first type of horizontal curve is simple curve or simple circular curve. Next that we have is a compound curve. Second, next in the list is reverse curve. The fourth one in the list of horizontal curve is transition curve, and the last in the horizontal curve is lemniscate curve. So all these 5 curves have different uses and different applications. So basically what we saw, curve basically are of two types, that is horizontal curve and vertical curves. Again horizontal curves are divided in 5 types. First one is simple curve, second one is compound curve, third one is reverse curve, fourth is transition curve, and the fifth and the last one is lemniscate curve. So we will see all these 5 curves in detail in the later slides. Also we will solve some numericals based on simple curve, compound curve and reverse curve, and also on numericals on transition curve. So let us see all these 5 curves in detail. So before moving to study the term that is curves, first of all we'll study some different definitions or different new terms. So we'll see all these terms one by one in detail. So first term that we will see before studying the term curve is the degree of the curve. So the angle of unit chord of length 30 meters subtends at the center of the circle formed by the curve is known as the degree of the curve. So we can see in this diagram that this angle, so this angle D is called as degree of the curve. So what it is the angle of unit chord of length 30 meters subtends at the center of the circle formed by the curve is known as degree of the curve. So जो डिग्री है कर्व की वो एक एंगल है जो कि एक यूनिट कॉर्ड है 30 मीटर लेंथ की, जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करवाएगी, that angle will be called as degree of the curve. What it is saying, the angle of unit chord of length 30 मीटर, ये जो कॉर्ड है AB एक कॉर्ड है यहाँ पर सर्कल की, ये AB एक कॉर्ड है. So the angle of unit chord of length 30 मीटर subtends at the center of the circle. सेंटर पे सर्कल के जो एंगल सबटेंड करेगा एक यूनिट कॉर्ड 30 मीटर लेंथ की, उसी एंगल को मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ द कर्व. Again, the angle of unit chord of length 30 meters subtends at the center of the circle formed by the curve is known as the degree of the curve. So you can see the degree of the curve is denoted by capital D. So it is designated as D. A curve may be designated according to either the radius or the degree of the curve. अगर एक कर्व है, अगर मैं उसको डेजिग्नेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास दो टर्म्स हैं जिसकी मदद से मैं कर्व को डेजिग्नेट कर सकता हूँ. फर्स्ट वन इज अ रेडियस. मैं कर्व का जो रेडियस है, सपोज कोई कर्व है, उसका जो भी सर्कल का एक आर्क है, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वही उस कर्व का भी रेडियस होगा. सो अगर मैं कर्व को डेजिग्नेट करना चाहता हूँ तो मैं दो टर्म के साथ उसको डेजिग्नेट कर सकता हूँ. फर्स्ट वन इज द रेडियस और दूसरा टर्म जो है दैट इज डिग्री. डिग्री जैसा कि अभी आपको मैं बता चुका हूँ, डिग्री इज द एंगल ऑफ यूनिट कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 मीटर्स विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट, व्हेन द यूनिट कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 डिग्री इट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री कर्व. अगर यूनिट कॉर्ड जो है वो 1 डिग्री एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, सो वैसे कर्व को मैं बोलूंगा 1 डिग्री कर्व. और अगर 2 डिग्री एंगल करती है सो इट विल बी कॉल्ड एज 2 डिग्री कर्व. और इफ इट इज subtending 3 degree curve, so that will be called as 3 degree curve. So in this slide we saw a new term, that is the degree of the curve. So the degree of the curve, what it is, the angle of unit chord of length 30 meters subtends at the center of the circle formed by the curve is known as the degree of the curve. It is designated as capital D. A curve may be designated according to either the radius or the degree of the curve.
When the unit chord subtends an angle of 1 degree, it is called as 1 degree curve, or when it will subtend the angle of 2 degree, so that will be called as 2 degree curve, or when it will subtend the angle of 3 degree, so that will be called as 3 degree curve. So now we will see the relation between radius of the curve and the degree of the curve. As I told you that degree of curve is the angle subtended at the center of the circle by unit chord. So we are having a relation between degree of the curve and the radius of the curve. So as you can see in this figure that this is a curve. This what we are seeing is a curve. Okay, all this what we are seeing is a curve. Okay, now we are having a unit chord, that is this AB. This is a unit chord. Again, if this is the center of a circle, that is O. So here we can see that R is the radius. This R is the radius of curve. This R is the radius of the curve, and this AB line is the unit chord. So the angle at the center is D. As I told you that degree of curve is denoted by capital D. So this is the degree of the curve. Now we will derive the relation between radius of the curve and the degree of the curve. So let AB be the unit chord of 30 meter. As I told you that this AB is the unit chord of 30 meter. O is the center, R is the radius, and D is the degree of the curve. This I told you. Again here OA equals to R, that means OA is the radius, AB equals to 30 meter. As I told you that the length of chord is the 30 meter. AC equals to 15 meter. Because AC is the half of AB, so AC will be equals to 30 by 2, that is 15 meter. After that we have angle AOC equals to D by 2. As I told you that the angle subtended at the center will be D degree, so angle AOC will be the half of angle AOB, so that will be equals to D by 2. From triangle OAC, if you will take triangle OAC and if you apply the sine formula, so sine theta equals to perpendicular upon hypotenuse, so sine D by 2 will be equals to AC upon OA. AC is perpendicular and OA is hypotenuse. So AC, as I told you, that equals to 15 and OA equals to R. So sine D by 2 will be equals to 15 upon R. So if I will cross multiply, so I will get R equals to 15 upon sine D by 2. And as I know that D is very small angle, so sine D by 2 will be equals to D by 2. If angle is very small, so I can write sine theta equals to theta. And if I will convert this radians, so I will get R equals to 1719 upon D. So this is the relation between degree of curve and the radius of the curve. So the relation is radius equals to 1719 upon D. Sometimes you will get this figure 1719 as 1720 also. So we have derived the relation, that is R equals to 1719 upon D. So next new term that we will study in this list is super elevation. So when a particle moves in a circular path, then a force, that is centrifugal force, acts upon it and tends to push it away from the center. So जब भी हम सर्कुलर पाथ में किसी भी चीज को मूव कराते हैं, कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव होता है, तो एक फोर्स उसमें एक्ट करता है जो कि उसको सेंटर से दूर पुश करने की कोशिश करता है. उस फोर्स को मैं बोलता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. What is written? When a particle moves in a circular path, then a force, that is centrifugal force, acts upon it and tends to push it away from the center. ये फोर्स उसको सेंटर से दूर पुश करने की कोशिश करता है. Similarly, when a vehicle suddenly moves from a straight to a curved path, centrifugal force tends to push the vehicle away from the road or track. अब जैसे कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उसको एक फोर्स बाहर की तरफ पुश करता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सिमिलरली जब एक व्हीकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो वहां भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो कि कोशिश करेगा उस व्हीकल को रोड से या ट्रैक से दूर पुश करने की. जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी पार्टिकल को करता है, उसी तरह सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल पे भी एक्ट करेगा जब व्हीकल रोड पे किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा. सिमिलरली व्हेन अ व्हीकल सडनली मूव्स फ्रॉम अ स्ट्रेट टू अ कर्व्ड पाथ, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंड्स टू पुश द व्हीकल अवे फ्रॉम द रोड और ट्रैक. This is because there is no component force to counterbalance the centrifugal force. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है
which tends to push away from the center. अब अगर ये फोर्स को मैं काउंटर बैलेंस करा दूं उसी डायरेक्शन में कुछ अपोजिट फोर्स लगा के, सो वो फोर्स बैलेंस हो जाएगा. बट अगर वो फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है तो वो उसको ट्रैक से बाहर कर सकता है. दिस इज बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट फोर्स टू काउंटर बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. To counterbalance the centrifugal force, the outer edge of the rod or rail is raised to some height so that the sine component of the weight of the vehicle may counterbalance the overturning force. अब चूंकि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करवाना है, तो उसको बैलेंस कराने के लिए जो आउटर एज होता है रेल या फिर रोड का, उसको हम थोड़ा सा रेस करवा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, सो दैट साइन कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल में काउंटर बैलेंस द ओवरटर्निंग फोर्स. जिसके कारण से वेट का जो साइन कंपोनेंट होता है वो उस फोर्स को बैलेंस कर देता है. सो व्हाट वी स्टडीड इन दिस स्लाइड, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, then a force, that is centrifugal force, acts upon it and tends to push it away from the center. Similarly, when a vehicle suddenly moves from a straight to a curved path, the centrifugal force tends to push the vehicle away from the road or track. This is because there is no component force to counterbalance the centrifugal force. To counterbalance the centrifugal force, the outer edge of the rod or rail is raised to some height so that the sine component of the weight of the vehicle may counterbalance the overturning force. So as I told you that we raise the outer edge with respect to inner edge to counterbalance the centrifugal force on a circular curve on road or railway track. So we are having a mathematical formula for the raising of edge, that is super elevation. So that is given by h equals to bv square upon gr for roads to capital Gv square upon small gr for railways, where b equals to width of roads in meters, capital G is the distance between the centers of rails in meters, r is the radius of the curves in meters, g is the acceleration due to gravity, v is the speed of the vehicles in meters per second, h is the super elevation in meters. So the formula for super elevation is h equals to bv square upon gr for roads and h equals to gv square upon gr for railways, and all the givens are written in this list. So this formula is important from your numerical point of view. Sometimes they will ask you to calculate the super elevation with respect to inner edges. Now we have types of horizontal curve. As I told you that basically curves two types. First one was the horizontal curve and the second one was vertical curves. So if we talk about the horizontal curves, so we have a number of types of horizontal curves. As I told you earlier also, the first one is simple circular curve, second one is compound curve, third one is reverse curve, fourth one is transition curve, and the last one is lemniscate curve. So all these curves have different applications and different uses. All these curves will be used on the field according to the given condition. The curve that should be used will depend upon the prevailing conditions of the field. So basically we are having 5 types of horizontal curves. First one is simple circular curve, second one is compound curve, third one is reverse curve, fourth one is transition curve, and the last and the fifth one is lemniscate curve. So the first type of the horizontal curve that we will see is the simple circular curve. So what simple circular curve is? So when a curve consists of a single arc with a constant radius connecting the two tangents, it is said to be a circular curve. So we will see this diagram. So as we can see that the first tangent is this. पहला जो tangent है वो AB है. AB जो है वो पहला tangent है और दूसरा tangent की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा tangent है BC. अब ये जो कर्व है, this curve starting from T1 and ending at this T2. So ये जो कर्व है ये एक सिंपल सर्कुलर कर्व है. क्यों सिंपल सर्कुलर कर्व है? क्योंकि ये अगर मैं बात करूँ तो एक सर्कल की आर्क है, एक सर्कल का पार्ट है. सो व्हेन अ कर्व कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क विद अ कांस्टेंट रेडियस, और इसका जो रेडियस है वो हर जगह जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रेडियस है, दैट इज आर. So when a curve consists of a single arc with a constant radius connecting the two tangents, it is said to be a circular curve. अगर ऐसा कोई कर्व होगा जिसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा होगा, उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगा, तो ऐसे कर्व को मैं बोलूंगा सिंपल सर्कुलर कर्व. यहाँ हम देख सकते हैं जो डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे दिस एंगल, जिस एंगल को मैंने पहले भी बोला था डिफ्लेक्शन एंगल,
सो यहाँ इसको 5 से बताया गया है। और सिंपल सर्कुलर कर्व से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस पर न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, सो दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। हियर वी आर जस्ट वाचिंग दैट व्हाट इज सिंपल सर्कुलर कर्व एंड डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। So when a curve consists of single arc with a constant radius connecting the two tangents, it is said to be a simple circular curve. So after simple circular curve, the second type of horizontal curve that we will study is the compound curve. So as we can see from name only that something will be added here, that is compounding sort of thing should be there. So when a curve consists of two or more arcs with different radii, it is called as a compound curve. जब जो कर्व है वो अलग अलग रेडियस के दो आर्क से मिलके बना होगा, सो दैट टाइप ऑफ कर्व विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड कर्व। व्हेन अ कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आर्क्स विद अ डिफरेंट रेडियस, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड कर्व। यहाँ पे अलग अलग दो अलग अलग कर्व्स मिलके एक कर्व को बनाएंगे और दोनों ही जो अलग अलग कर्व होंगे उनका रेडियस अलग अलग होगा। Such a curve lies on the same side of a common tangent and the centers of the different arcs lie on the same side of the respective tangent. So जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, लेट मी टेक ओके। सो जो पहला कर्व है वो ये वाला कर्व आप देख पा रहे हैं, ये दिस इज द फर्स्ट कर्व एंड द रेडियस ऑफ दिस कर्व इज r1 एंड हियर वी विल सी ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस इज द सेकंड कर्व, दिस इज द सेकंड कर्व एंड द रेडियस फॉर दिस कर्व इज द r2। सो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं अलग अलग रेडियस के दो कर्व है। पहला जो कर्व है उसका रेडियस है r1 और दूसरा जो कर्व है उसका रेडियस है r2। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, सच अ कर्व लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ये जो कर्व है दोनों सेम साइड पे होंगे कॉमन टेंजेंट के। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो है दिस BT2C, दिस इज द कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ दिस कर्व। इन दोनों कर्व के लिए जो ये BT2C जो है ये कॉमन टेंजेंट है इन दोनों कर्व्स के लिए। और इनका जो सेंटर है एंड द सेंटर्स ऑफ द डिफरेंट आर्क्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव टेंजेंट। इनका जो सेंटर है वो सेम साइड पे लाई करेगा उनके रिस्पेक्टिव टेंजेंट पे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड पे जो कर्व है जिसका रेडियस r1 है उसके लिए जो सेंटर है दैट इज O1 और अगर मैं r2 की बात करूं सो उसका जो सेंटर है दैट इज O2। सो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग कर्व हैं, पहले का रेडियस है r1 दूसरे का रेडियस है r2। सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज कंपाउंड कर्व। सो व्हाट इज रिटन, व्हेन अ कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आर्क्स विद डिफरेंट रेडियाई, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड कर्व। दो अलग अलग आर्क्स होंगे और दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। Such a curve lies on the same side of a common tangent and the centers of the different arcs lie on the same side of their respective tangents. So next type of curve that we are having, the next type of horizontal curve that we are having is the reverse curve. So you can see in this figure also that this is a reverse curve. So a reverse curve consists of two arcs bending in opposite direction. So in compound curve both the arcs were on same side. So in the last, that is a compound curve, both the arcs were on the same side. But in reverse curve, a reverse curve consists of two arcs bending in opposite direction. Their centers lie on opposite sides of the curve. अब जैसे कि कंपाउंड कर्व में उनके सेंटर्स भी एक साइड पे थे और दोनों कर्व भी एक ही साइड पे थे, बट रिवर्स कर्व में दो अलग अलग कर्व्स होंगे, उनके रेडियस इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते, बट उनका जो सेंटर है वो दोनों अपोजिट साइड पे लाई करेंगे और दोनों आर्क्स भी अपोजिट साइड पे होंगी। जैसे कि यू कैन सी इन दिस फिगर दैट दिस, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर r1 रेडियस का जो कर्व है, सो दिस इज द रेडियस फॉर r1, दिस इज द कर्व ऑफ रेडियस r1। सो इट्स सेंटर इज ऑन दिस साइड, ये इसका सेंटर है जो कि O1 है और जो रेडियस है वो उसका r1 है। अगर मैं सेकेंड कर्व की बात करूं, सो इसका जो सेंटर है वो अपोजिट साइड पे, दिस इज O2, दिस इज ऑन द अपोजिट साइड एंड द रेडियस इज r2। R1 and R2 can be equal or cannot be equal. So a reverse curve consists of two arcs bending in opposite directions. Their centers lie on opposite sides of the curve. Reverse curve का जो सेंटर है opposite side पे lie करेगा और जो दोनों कर्व्स हैं उनका आर्क्स भी दोनों opposite direction में होंगे। Their radii may be either equal or different and they have one common tangent. उनका जो रेडियस है वो इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। इट इज नॉट दैट इज नेसेसरी दैट दीज आर इक्वल और अनइक्वल एंड दे हैव वन कॉमन टेंजेंट, और इन दोनों के बीच में एक कॉमन टेंजेंट होता है।
So a reverse curve consists of two arcs bending in opposite direction. Their centers lie on opposite sides of the curve. Their radii may be either equal or different and they have one common tangent. So next type of horizontal curve that we are having is a transition curve. So a curve of variable radius is known as transition curve. ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जिसका रेडियस जो है वो वेरिएबल होगा, दैट मीन्स इट विल चेंज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पाइरल कर्व और ईसमेंट कर्व. ट्रांजिशन कर्व को मैं स्पाइरल कर्व और ईसमेंट कर्व भी बोलता हूँ. इन रेलवेज सच कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ सर्कुलर कर्व टू मिनिमाइज सुपर एलिवेशन. रेलवेज में ये जो कर्व है ट्रांजिशन कर्व, सच कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सर्कुलर कर्व. इस सर्कुलर कर्व के दोनों साइड प्रोवाइड किया जाता है टू मिनिमाइज सुपर एलिवेशन. Excessive super elevation may cause wear and tear of the rail section and discomfort to passenger. Super elevation अगर ज़्यादा हो जाएगा so that will cause discomfort to the passengers. Now we'll see that what is transition curve. See, if we will see this part. So if we will see this part here, where we are having the straight line. So the radius of the straight line is infinite. So here the radius of the curve is infinite, and if we will see here where the circular curve has been started, so at that place the radius of curve will be r, that is some radius arbitrary r we are taking. So what we can conclude from here that the radius is changing from infinite to a particular value, that is r. So we can't change this very rapidly suddenly, that we can do this from here infinite to a value r. So what we will do, we will provide this curve very slowly, that is we will change the radius very slowly, and in this way we will provide the super elevation also. So where the radius will change from infinite to a value r, so that type of curve will be called as transition curve. So what we saw from here, a curve of variable radius is known as transition curve. It is also called as spiral curve or easement curve. Why easement curve? Because it is restricting the discomfort to the passenger. If suddenly we will apply this curve of radius r, so it will cause discomfort to the passengers. In railways, such curve is provided in both sides of a circular curve to minimize super elevation. Excessive super elevation may cause wear and tear of the rail section and discomfort to passengers. So last type of curve, horizontal curve that we are having is a lemniscate curve. So a lemniscate curve is similar to a transition curve and it is generally adopted in city roads where the deflection angle is large. लेमनिस्केट कर्व ट्रांजिशन कर्व के जैसा ही है जिसको कि हम जनरली सिटी रोड्स के लिए यूज करेंगे वेयर द डिफ्लेक्शन एंगल इज लार्ज, जहां जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो बहुत ज्यादा होगा. सो इन द फिगर बिलो ओपीडी शोज द शेप ऑफ सच अ कर्व. ओपीडी जो है वो हमें एक लेमनिस्केट कर्व शो कर रहा है इन दिस गिवन डायग्राम. हियर वी कैन सी दिस इज ओपीडी, दिस इज ओ, दिस इज ओ, दिस वी आर हैविंग इज पी एंड दिस वी आर हैविंग इज D. So in the figure below, OPD shows the shape of such a curve. The curve is designed by taking a major axis OD, minor axis PP dash, and axis OA and OB. So you can draw this curve by using all these four terms. That is, the curve is designed by taking a major axis OD, minor axis PP dash with origin O, and axis OA and OB. OP is known as a polar ray, and alpha is the polar angle. Here we can see this OP. This OP is the polar ray. Here in the diagram it is also written polar ray, and alpha is the polar angle. So you can see all these points here also. So a lemniscate curve is similar to a transition curve and is generally adopted in city roads where the deflection angle is large. In the figure below, in this figure, OPD shows the shape of such a curve, and all these terms are given in this diagram. Thanks a lot for watching the video. If you have any doubt, any suggestion or any query regarding the video, so you can contact me on this given mobile number, or you can mail me your doubt, your suggestion or any query on this given email ID, that is robinsinggurjar@systech.ac.in. Again, thanks a lot for watching the video.